Is it visible for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So it's day three. In this session, we will discuss about the Azure IoT Central. That is a part of the Azure IoT services, or we can say resources. So in this session, we will discuss a little bit introduction about the IoT Central, and then we will create some IoT. Then we will perform some experiments using the IoT Central. For that, we have to create IoT Central, and we will connect some sensors through the IoT Central. This is our demo, and then we will look about the assignment. So I think Priti is talking about some surprise. Yes, I have some surprise for you. And the intention of all the surprise is to introduce you some kinds of actual practical electronic things like microcontrollers, sensors, and other things. And for that, I have to use camera. तो आई हैव टू सरप्राइज जो कि मैं एक अभी दिखा रहा हूँ और अनदर वन है वो हम सेशन के लास्ट में देखेंगे। आई थिंक आपको ये विजिबल होना चाहिए। दिख रहा है आपको? सर वो डिवाइस हल्का सा अच्छा। छुप जा रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की वजह से let me remove the ऑल्सो background. सर थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी लो आ रही है। आई होप ये मेरे एंड से नहीं हो रहा हो ये प्रॉब्लम। हमें भी पिक्चर क्वालिटी मेरे एंड से खराब हो सकती है। वेट, मैं सबसे पहले तो ये बैकग्राउंड को रिमूव करता हूँ। आई थिंक उसकी वजह से कुछ इश्यू है। देखिए अभी थोड़ा आपको क्लियर होगा। यस सर। Yes. यू कैन सी। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये दो सेंसर है, इनको हम बोलते हैं IR सेंसर और वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जब इनके बीच में से कोई भी चीज पास होगी एज ए थिंग ऑब्जेक्ट, वी कैन से व्हीकल और ह्यूमन और एनी काइंड ऑफ थिंग, तो ये हमको आउटपुट देता है। जो आउटपुट जिसका है वो हमको एक रिले फॉर्म में आउटपुट देता है, जैसे हमारे जो रिले के अंदर होता है NONC कनेक्टेड। यू कैन सी कि ये एक वायर शॉर्ट कर देगा जब इसके पास कोई भी इसके बीच में से पास होगा। ये वाली चीज़ आप कहाँ देख सकते हैं? अगर आपने कहीं पे स्मार्ट टोल गेट्स देखे हो तो टोल गेट्स पे ये चीज़ लगी रहती है। जब भी हम वहाँ से कार या पास होती है कोई से भी व्हीकल, तो एक सायरन की आवाज़ आती है। तो ये भी सेम काम करता है। जब इसके बीच में से कोई चीज़ पास होती है तो ये सायरन को ट्रिगर करता है। राइट नाउ हम इसको डिटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा हमें मैं इसको एज ए सेंसर यूज़ कर रहा हूँ। इसके जो आउटपुट है मैं उसको एज अ इनपुट यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर, इस बोर्ड के अंदर, इस बोर्ड के अंदर क्या क्या लगा हुआ है? एक रास्पबेरी पाई 5 लगा हुआ है यहाँ पे, रास्पबेरी पाई 5, और यहाँ पे एक कैमरा लगा होता है USB कैमरा, जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये किस पर्पज़ के लिए था और भी कंपोनेंट में पहले आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। जो आपको इस साइड में दिख रहा है ये 4 चैनल रिले मॉड्यूल है, जिसके थ्रू मैंने आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट किया है। जो ये सेंसर था, ये सेंसर आउटपुट देता है इस रिले चैनल पे। मैं रिले चैनल से वोल्टेज को रीड करता हूँ, और वोल्टेज को रीड करने के लिए मुझे इसके अंदर एक वोल्टेज डिवाइडर लगाना पड़ा। और वोल्टेज डिवाइडर हम कैसे बना सकते हैं? इट इज जस्ट यूजिंग द टू रजिस्टर्स। आई थिंक वो इसके अंदर आपको दिख नहीं होंगे। बस दो रजिस्टर को जोड़ के मैंने वोल्टेज डिवाइडर बनाया और उसके थ्रू वोल्टेज रीड किया।
क्योंकि जो यहाँ से इनपुट वोल्टेज आता है वो आता है मोर देन 3.3, और रास्पबेरी पाई 3.3 को रीड नहीं कर सकता। अगर हम इसकी जीपीआईओ पे मोर देन 3.3 वोल्टेज देंगे तो ये डैमेज हो सकता है। इसीलिए मैंने बीच में वोल्टेज डिवाइडर लगाया, और साथ में यहाँ पे एक बारीक सा एक मॉड्यूल लगा हुआ है अंदर, जिसको हम बोलते हैं लॉजिक लेवल शिफ्टर। तो क्या करता है कि रास्पबेरी पाई 3.3 आउटपुट देता है, लेकिन जो हमारा रिले बोर्ड है ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट करता है एज अ सिग्नल। तो हमको सिग्नल को 3.3 से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने लॉजिक लेवल शिफ्टर लगाया हुआ है इसके अंदर। ऊपर जो दिख रहा है ये रास्पबेरी पाई का फैन है, जो कि इसको जब ये हीट होता है तो इसको कूल रखने में हेल्प करता है। यहाँ पे हम लगाते हैं कि यूएसबी कैमरा, ये यूएसबी के जो ऑप्शन दिए हैं इसके अंदर, तो हम यहाँ पे एक यूएसबी कैमरा लगाते हैं। वो यूएसबी कैमरा क्या करता है, हमने इसके अंदर एक मशीन लर्निंग का मॉडल डिप्लॉय कर रखा है। यू कैन सी इट्स एज आईओटी एज डिवाइस, जो कि हम अपने अपकमिंग सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक मान सकते हो आईओटी एज डिवाइस है, और इसके अंदर हमने एक मशीन लर्निंग का मॉडल इसके अंदर डिप्लॉय कर रखा है। वो क्या करता है, वो उसको ऐसे ट्रेन किया है कि जो वहाँ पे उनको पर्टिकुलरली एक व्हीकल ट्रैक करना है, जो कि ये ट्रक को डिटेक्ट करता है और ट्रक की स्पीड को डिटेक्ट करता है, एंड साथ में ट्रक की डायरेक्शन को भी डिटेक्ट करता है, और यूजिंग द मशीन लर्निंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। जब ये ट्रक को डिटेक्ट करता है तब इसको क्या करना है, तब इसको कंट्रोल करना है ट्रैफिक लाइट्स को, और जो टोल गेट होता है वहाँ पे, उस गेट को कंट्रोल करना है। और हमने डबल, ताकि उससे कभी मिस ना हो, इसलिए हमने सेंसर्स का भी यूज़ किया है, ताकि हमको सेंसर से भी ये पता चल लगता है कि हाँ ट्रक यहाँ पे कोई सा ट्रक पास हुआ है अभी इस गेट से। तो उसके बेस पे हमको एक एप्लीकेशन है, एक प्राइवेट कंपनी की, जिनका खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये हार्डवेयर बनाया गया है। और हम इस हार्डवेयर को कह सकते हैं, जो कि हमने एक बार अभी तक हम फर्स्ट सेशन में पढ़ा था, AIoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये वही कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हम AI का भी यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और उस पे मशीन लर्निंग परफॉर्म करने के लिए। साथ में हम IoT का भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो जो भी डिटेल आएगी, जब भी इसने ट्रक को डिटेक्ट करेगा, इसको साथ में जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर पे भी शेयर करनी है, लेकिन उस केस में इंटरनेट वहाँ पे होगा नहीं। तो उस केस में हम यहाँ इसके अंदर अभी ऐड करने वाले हैं GSM मॉड्यूल, जो कि एक 4G GSM मॉड्यूल होगा, जो कि इसको इंटरनेट के थ्रू जो डेटा है वो सर्वर पे शेयर करने में हेल्प करेगा। ये एक्चुअली प्रोटोटाइप है, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास पीसीबी यूज़ नहीं किए गए। मैंने एक नॉर्मल रफ पीसीबी, इसको हम बोलते हैं जीरो पीसीबी, जो कि हमें प्रोटोटाइप, जब हम जब कहीं हमको क्विक प्रोटोटाइप बनाना होता है, तो हम विदाउट एनी मशीनरी हम इस पे सोल्डरिंग कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक जस्ट बेसिक प्रोटोटाइप था, जो कि नॉर्मली एक जीरो पीसीबी और वायर्स के थ्रू बनाया गया है। और जैसे सेंसर आपने देखे लिए हैं। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा सरप्राइज, और अगर आप इसकी तारीफ करना चाहें तो चैट सेक्शन में कर सकते हैं। ओके चलो, बैक टू द वर्क। सरप्राइज खत्म। ओके, सो वेलकम टू द वर्क वर्ल्ड ऑफ द एजर IoT सेंट्रल। आज हम डिस्कस करेंगे एजर IoT सेंट्रल। जैसे नाम से समझ आ रहा है, सेंट्रल, दैट मीन्स इट इज काइंड ऑफ हब, जो कि जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली है आपके IoT डिवाइसेस और मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। इट्स काइंड ऑफ क्लाउड, जहाँ पे हम मल्टीपल्स IoT डिवाइसेस को कनेक्ट करके मॉनिटर कर सकते हैं। Let's see its definition. So it is a platform that work as a software as a service that help you to connect, monitor, and manage devices and data. It is a ready-made UX API surface for the IoT solution development that can scale to support millions of connected devices as a IoT center offer feature. Okay, so according to its definition, ये क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। हम इसको अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये हमको हेल्प करता है हमारे जो IoT डिवाइसेस है उनको कनेक्ट करने में, उनको मॉनिटर करने में और उनको मैनेज करने में। और जो उनका डेटा होता है हम उसको इस पे अलग अलग सर्विसेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और उन पर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करके देख सकते हैं।
इट इज़ ऑल्सो रेडीमेड सोल्यूशन। दैट मीन्स कि हमको जब हम अपना स्टार्टिंग में कोई भी IoT सोल्यूशन बनाने जाने जा रहे हैं और उस केस में हमको चाहिए एक एप्लीकेशन और हमको चाहिए एक मैनेज करने के लिए एक अच्छा क्लाउड और उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको चाहिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज, राइट। तो हम अपने कस्टम सोल्यूशन बनाने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस केस में, राइट। तो हमको एजर IoT वो चीज़ें रेडीमेड प्रोवाइड करता है। हम इसके थ्रू UX बना सकते हैं, UI बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं, APIs बना सकते हैं, राइट। देन वी कैन आल्सो कनेक्ट इट मिलियंस ऑफ डिवाइसेस। तो ये एक स्केलेबल सोल्यूशन है, स्केलेबल क्लाउड है, जहाँ पे हम जितने चाहें अपने IoT डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और ये उस चीज़ को हैंडल कर सकता है। क्योंकि हमको जब हम IoT सॉल्यूशंस बनाते हैं, हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो सॉल्यूशन हो स्केलेबल हो। जब हमारे पास नंबर ऑफ IoT डिवाइसेस बढ़ जाए, उस केस में ये हैंडल कर पाए। ओके, लेट्स डिस्कस सम ऑफ इट्स फीचर। तो की है सबसे पहले डिवाइस मैनेजमेंट। तो connect and manage a variety of the devices. What we can do with the Azure IoT is central. We can connect and manage different kinds of variety devices. Because हम जब IoT solution बनाएंगे तो हमारे पास हो सकता है different kinds of IoT devices हो, different kinds of products हो। Let's say कोई IoT data lover हो गया, कोई सिर्फ monitoring purpose के लिए हो गया, हमारा कोई edge device हो गया। So different kinds of device we can connect here. And for example, imagine a farm with temperature sensor in greenhouse connected to Azure IoT Central. You can monitor all the sensors from one place. So आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं एक एग्रीकल्चर फार्म जहाँ पे मल्टीपल सेंसर्स लगे हुए हैं। Let's say to monitor the soil health, to monitor the plant growth, okay, to monitor the environmental temperature like sunlight, temperature, humidity, wind speed, and uh, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, and we can also predict that coming weather conditions. Okay, so let's say there are multiple sensors. We can say there may be 20, 30, or hundreds of sensors, hundred of device. So to manage this all kinds of the device and sensor, we can connect all these things to Azure IoT, and we can make applications to monitor our farm or the crop health and other things in the agriculture sector. Next is the data visualization. So what we can do, we can create dashboard to view the real-time and historical device data. Historical device data, that means past data generated from the IoT devices. Because when we have a big amount of data, then it is difficult to extract a valuable message from the raw data. What we can do, we can plot some of graphs from the data that is stored in our database, or we can also view the real time or historical graph from that data. Real time, that means you can see in the picture there is a, I think there is a graph that is a real time, we can say कि जहाँ पे हम, let's say there are critical condition in the industry to monitor the temperature, so we can view the real time temperature uh, increasing or decreasing in the temperature side. For an example, we can take our fitness tracker that is connected with the Azure IoT Central to see your daily steps, heart rate, and sleep patterns all in one dashboard. बस फिटनेस ट्रैकर जो होता है उसके अंदर काफी सारे अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसर होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी को शो करने के लिए। तो व्हेन वी लाइक आई थिंक काफी लोगों के पास फिटनेस ट्रैकर होगा। जब हम उसके अंदर अपने डेली स्टेप्स देखते हैं कि हमने कल कितना चला था, हमने कि हमारे लास्ट वीक का एवरेज क्या है, राइट। हम एवरेज कितना स्टेप पर डे के अंदर चलते हैं, या फिर हम उस जो डेटा है पास्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमको कितना डेली स्टेप्स चलना चाहिए। हमारा हार्ट रेट जो कि एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखाता है कि आपका हार्ट रेट नॉर्मली कितना रहता है, कितना रहना चाहिए। स्लीप पैटर्न, राइट, हम स्लीप पैटर्न्स के लिए काफ़ी सारे ग्राफ हम बना सकते हैं कि हम एवरेज कितना सोते हैं, कितनी बार रात में हमारी जो स्लीपिंग है वो डिस्टर्ब होती है, राइट, और हमारा टाइम क्या है, मैक्सिमम टाइम जिसके अंदर हम सोते हैं। तो स्लीपिंग पैटर्न से भी काफ़ी सारी चीज़ें को एक्सट्रैक्ट करके हम वहाँ से काफ़ी
यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं. इट्स काइंड ऑफ मेडिकल डिवाइस. So the second one was digital visualization, and third was remote command. Remote command to send the device remotely. Send command to device remotely. And example, you forget to turn off the lights, no problem. Use Azure IoT Center to turn off your phone from when you are not home. Right. Remote command. क्योंकि remote commands काफी, I think that's a very essential need for an IoT ecosystem. We can take an example of smart home. जहाँ पे हम अपनी लाइट फीलर और फ्रीज कूलर फैन, राइट, इन सब को हम अपने मोबाइल से कंट्रोल कर पाएँ या फिर हम सेंसर के थ्रू ऑटोमेटिक कंट्रोल हो पाए. बट उस केस में हमको उनको कमांड्स देना पड़ेगा. वही एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेट्स से हम घर से बाहर निकल गए कहीं पर ऑफिस या कॉलेज और हमारे घर की लाइट ऑन हो गई, ऑन रह गई है, या फिर कई बार होता है कि किसी ने मोटर चालू करी लेकिन उसको ऑन छोड़ दिया. तो इन दैट केस वी कैन सेट अ इकोसिस्टम जहाँ पे हमको नोटिफिकेशंस आ जाए कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं जो कि ऑन रह गई हैं. उस केस में हम अपने कहीं से भी अपने मोबाइल के थ्रू उस चीज़ को ऑन या ऑफ कर पाएँ, राइट. So we can set different types of commands to control our electrical or electronic appliances to the Azure IoT Center. And of course, security matters because जब हम एक IoT डिवाइस बनाते हैं, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो the communication between the IoT devices, between server and between the user applications, जो communication हो रही है उसको secure होना ज़रूरी है. बिकॉज कोई भी अगर उसको हैक कर सकता है तो वो यूजर की इंफॉर्मेशन और इवन कंट्रोल कर सकता है आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को, राइट. लेट्स से किसी ने आपके डिवाइस हैक कर लिया और आपके एसी का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा दिया. गर्मी में तो डेफिनेटली जो कि काफ़ी डेंजरस है. और भी इस टाइप से आई थी, हमने मूवीज़ में भी देखा हो, कई बार लोग कार को हैक कर लेते हैं. तो क्योंकि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इनबिल्ड है, क्योंकि वो कार के अंदर भी पूरा जो मैक्सिमम सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से कंट्रोल होता है. तो इस चीज़ों को हैक कर लेना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस है. तो हम जब भी एक IoT डिवाइसेस बनाते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं. सो IoT सेंट्रल के अंदर क्या होता है, इट हैज़ अ बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस एंड डेटा एज़ वेल. Example, your smart home security system is connected to Azure IoT Central. The platform help ensure only authorized user can access your system. राइट. हम अपने स्मार्ट होम को Azure IoT सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट. लेट्स से कि आपके किड्स के घर पे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके वहाँ पे एंटर करे. तो हम एक IoT सिस्टम बाहर रख सकते हैं जो कि सबसे पहले ऑथराइज करेगा कि किसी को अलाउ करना है या नहीं करना है, या फिर वो ऑथराइज करने के पहले हमको दिखा दे कि ये जो पर्सन है गेट पर है, इसको अलाउ करना है नहीं करना है. So we can make such kind of system who can provide the authentication in our house. Okay, let's see some of example that is helpful when we develop some kind of application through the IoT center. We can take example of the smart fridge that can be connected with the Azure IoT Hub. So schedule automatic grocery delivery through the platform. जब भी हमारे फ्रिज के अंदर कुछ सामान खत्म हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से वी कैन मेक एन IoT devices can directly order our grocery from the from the online platform, right, like Amazon Fresh, JioMart kind of things. तो जैसे ही हमारे फ्रिज के अंदर कुछ भी खत्म होता है तो वो हम एक डिवाइस बना सकते हैं जो कि ये कंटिन्यूसली ये मॉनिटर करेगा. हमने उस डिवाइस को Azure IoT सेंटर के साथ कनेक्ट कर दिया और जैसे ही वो ये मॉनिटर करता है कि हमारे फ्रिज के अंदर या फिर हमारे किचन के अंदर कोई चीज़ खत्म होने वाली है, तो हम क्या कर सकते हैं. हमने सबसे पहले तो वो जो डेटा भेजा Azure IoT सेंटर पे, वहाँ पे हमने एक सर्विस को Azure IoT फंक्शन का यूज़ किया कि जब भी जो क्वांटिटी है एक किसी भी चीज़ की क्वांटिटी एक पर्टिकुलर नंबर से कम हो जाती है, उस केस में हमको एक वेब हुक सर्विस ट्रिगर करनी है, एक API ट्रिगर करनी है. वो API क्या होगी, वो API होगी ऑर्डर करने की. So that is a very good example in which we can use Azure IoT Center. Example 2, the smart pet feeder. Set a schedule for automatic feeding through the IoT Center.
राइट नाउ काफ़ी लोगों के पास आई थिंक पेट्स होते हैं, और काफ़ी लोग उनको छोड़ के भी जाना पड़ता है कई बार। लेट्स से वी आर इन ऑफिस, वी आर इन सम बिजी इन अदर काइंड ऑफ वर्क। सो उस केस में किसी भी पेट का ध्यान रखना, हम वो इस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं कि हमने एक शेड्यूल सेट कर दिया। लेट्स से यू हैव अ कैट एट योर होम। हम वहाँ पे से एक एम्बेडेड सिस्टम बना सकते हैं जो कि काइंड ऑफ स्मार्ट पेट फीडर मशीन होगी, और हम उसके अंदर शेड्यूल सेट कर सकते हैं थ्रू द एजर IoT सेंट्रल कि लेट्स से हर 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर ये स्मार्ट पेट फीडर ओपन होना चाहिए और इसके अंदर से कुछ फीडिंग आइटम्स निकलना चाहिए। ओके, so this is the second example through which we can connect Azure IoT Center. Example three, that is a very good example and a very common example right now. This is the agriculture. So farmer can use Azure IoT Central application to optimize the irrigation, fertilizer application, and harvest schedules, leading to increased crop yield and resources efficiency. If we want to connect our agriculture farm to the our application, what we can do, uh, we can connect our motors, or we can say our pump that is that help us in the irrigation system. So we can connect our irrigation system to the cloud, and what cloud help us uh, in irrigation system. Let's say कि हमने अपने फार्म्स के अंदर अलग अलग सेंसर लगा दिए टू मॉनिटर द इरिगेशन सिस्टम। Let me give one example that I made in my college. आई थिंक अपने खेतों के अंदर क्या जो लाइंस होती हैं जिनको हम क्यारियां बोलते हैं, हम खेतों के अंदर एक वो लगा सकते हैं, मॉइस्चर सेंसर। ओके, तो जहाँ से पानी जा रहा होता है वहाँ से एक क्यारी के अंदर पानी फीड होने में लगभग कुछ मिनट से लगते हैं, 20 मिनट 30 मिनट। तो जैसे ही वहाँ पे कम्प्लीटली वो क्यारी विथ वाटर फिल्ड हो जाती है, तो इसके एंड में एक सेंसर लगा होता है, मॉइस्चर सेंसर। जैसे ही मॉइस्चर सेंसर को डिटेक्ट होता है कि यस इस खेत के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर पानी फिल हो चुका है, वो क्या करता है, वो सेंसर एक मैसेज भेजेगा हमारे सेंट्रल हब को, यस ये वाला जो सेक्शन था फार्म का वो फिल हो चुका है। उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में जो पाइप है या फिर जो डायरेक्शन ऑफ द पाइप चेंज होती है, वो सेकंड पार्ट या फिर ये कह सकते हैं सेकंड कैरी के अंदर वो पानी फिल करना स्टार्ट करेगा। तो उस केस में क्या हो रहा था कि मोटर कंट्रोल हो रही थी या फिर जो इरिगेशन सिस्टम है वो कंट्रोल हो रहा था सेंसर्स के थ्रू, और उसको सेंसर बता रहे थे कि यहाँ पे पानी फिल हो चुका है, अब नेक्स्ट उसमें पानी फिल करना है। तो वी कैन मेक सच काइंड ऑफ स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। उससे क्या होगा कि जो वेस्ट होता है कई बार वाटर खेतों से बाहर पानी चला जाता है, तो वो वेस्टेज नहीं होगा पानी का। हम उस केस में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इरिगेशन सिस्टम को। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन लाइक जैसे कि अभी मोस्ट ऑफ खेतों में क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो सीधा फर्टिलाइजर्स को डालते जाते हैं खेतों के अंदर, जो कि ज़्यादा डालना भी हार्मफुल है, राइट। तो उस केस में हम ये किसानों को बता सकते हैं, या फिर अगर हम अपनी सोइल को ये चेक कर पाए हमारे सोइल के अंदर सेंसर के थ्रू, अगर हम उसके जो केमिकल्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन, ये पैरामीटर्स अगर हम सोइल के एनालिसिस करके एक सही एल्गोरिदम के थ्रू अगर हम फार्मर्स को ये बता पाए कि जितना इसके अंदर नीड कितनी है, राइट। राइट नाउ फार्मर्स क्या डालते हैं अपने खेतों के अंदर, मिक्सचर ऑफ NPK, राइट, मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल, फास्फोरस, पोटेशियम। तो वो मिक्सचर ना डालते हुए अगर हम उनको एक एल्गोरिदम के थ्रू ये बता पाएँ IoT सिस्टम के थ्रू कि आपको सारा मिक्सचर नहीं डालना है, खेतों के अंदर सिर्फ वही डालना है जो कि जिस चीज़ की पर्टिकुलर नीड है। हो सकता है उसके अंदर नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं हो सकता है कि नाइट्रोजन जितना किसान डाल रहे हैं उतनी ज़रूरत ना हो। तो हम एक स्मार्ट फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि फार्मर्स को ये बताए कि कब कितना उनको फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड डालना है। उससे क्या होगा राइट नाउ कि जो हो रहा है सबसे बड़ा इश्यू जो अभी है कि सॉइल की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द इवन गवर्नमेंट एंड फॉर द दैट इज़ अ बिग सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर।
उसके लिए भी बहुत बड़ा ये एक इशू है, जो कि हम चाहें तो, अगर हम कोशिश करें तो IoT के थ्रू ये वाला इशू सॉल्व किया सकता है। बिकॉज अगर सॉइल की हेल्थ खराब होगी तो यू कैन सी द चेंजेस इन द क्लाइमेट, राइट? तो देर इज a very disadvantage when we are not taking care about the soil, right? Next is the harvest schedule. Okay, we can set a schedule, like we can predict the schedule, our harvesting the crop, कि कब उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, then leading to increase the crop yield and resource efficiency. Definitely जब हम एक फार्म को अच्छी तरीके से ऑटोमेशन के साथ और विथ एक्यूरेसी मैनेज करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो क्रॉप्स हैं उसके प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा और हमारे रिसोर्सेज की एफिशिएंसी बढ़ेगी। लाइक अभी हम जो एग्जांपल लिया था रिसोर्सेज की एफिशिएंसी, दैट मीन्स कि जो जितना कॉस्ट आती है, जो हम अनवांटेड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डालते हैं, वो किसानों को नहीं डालना पड़ेगा। उससे उनकी जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो दिस वाज द थर्ड एग्जांपल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, एंड दिस इज अवर मैसेज कि आप जब हम एज IoT कुछ बना रहे हैं, हम उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो हमारे नेचर को हार्म ना करे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाए हमारे क्लाइमेट चेंज के अंदर। कि अभी गर्मी कितनी है और हर साल कितनी बढ़ती जा रही है। दिस इज बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयरिंग ऑफ द प्लांट्स एंड आवर सॉइल, राइट? So we should make such kind of system वो help to plant monitoring और our soil की जो health है उसको वापस से सही करने में help करे। हम उस kind of system बनाएं और ऐसे ह्यूमन हम थोड़ा सा टाइम कंट्रीब्यूट करें प्लांट्स की मॉनिटरिंग के लिए। और हो सकता है तो हम कहीं ना कहीं एक प्लांट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं लगाने की और उसको मेंटेन करने की। Okay, so this is the basic introduction about the Azure IoT Central. You can ask if you have any kinds of doubt regarding this basic introduction. Then we will go for the practical. हेलो एवरीवन, मैंने आप सबके लिए माइक एबल कर दिया है, तो इफ यू हैव एनी डाउट्स आप अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। I think there is no doubt. I can see in the chat section. Okay, so हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम Azure IoT सेंट्रल का एक एग्जांपल देखेंगे और हम उसको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे। उसके अंदर हम कुछ सेंसर्स पे जो डेटा है वो Azure IoT सेंटर पे सेंड करेंगे। तो उसके लिए हम अपने Azure अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। And one more thing, I am requesting all the coordinators of this program, जो इशू अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आ रहा है आईडी को लेकर, आप प्लीज़ ट्राई कीजिए कि वो इशू सॉल्व हो पाए। माइक्रोसॉफ्ट एजर IoT प्लेटफॉर्म आई थिंक वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है इसको एज अ यूनिवर्सिटी। So I hope student will get help from your side. Okay, so right now I think this is my application as a IoT central application. But before making another one, we have to delete this one because I think there is only limited options to create as a IoT central. So
फर्स्ट मैं इसको डिलीट करता हूँ जो मैंने एक IoT सेंट्रल एप्लीकेशन बनाई थी, देन वी विल क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन फ्रॉम द स्क्रेच. Okay, so let's create another IoT central application. Click here to create application, then keep it as a free trial. You can select the resources group, then enter resources name. What we can do, smart agriculture. Smart agri. We can take an example of a smart agriculture system. Or sorry, or I think we should take it as related to the our today's example. We can say a smartphone. Tracker. हम इसको लेते हैं स्मार्ट ट्रैकर. So Dana field, okay. So it is accepted Dana. And here we have to select any kind of temperature. The value was not empty. So these are the template. जैसे मैंने बताया था कि IoT सेंटर एप्लीकेशन के अंदर हम एक चाहे तो कम्प्लीटली एक वो भी बना सकते हैं डैशबोर्ड काइंड ऑफ थिंग्स. उसके लिए हम टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा IoT डिवाइसेस है तो वो किस टाइप के टेम्पलेट से रिलेटेड है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाटर कंजप्शन मॉनिटरिंग लाइक वाटर वेंडिंग मशीन हम बना सकते हैं. डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर kind of tracking device, smart inventory system for the warehouse, connected logistic, smart meter analysis. That means we can make any kind of a smart meter like energy meter, micro fulfillment center, continuous patient monitoring that is helpful for the patient monitoring system in hospitals, custom applications, and there are various kind of. Right now, I'm selecting custom application, and we can select our nearest area. Okay, so I think this is fine for now. We can review all the information that we entered, and then we can click on the create. So this is the demo कि हम कैसे IoT सेंटर क्रिएट कर सकते हैं. हम वहाँ पे अलग अलग वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं टेम्पलेट्स अकॉर्डिंग टू our IoT devices, और वी कैन क्रिएट आवर कस्टम. ये थोड़ा सा टाइम लेता है डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस. लेट्स फिनिश इट. So these are the overview about our uh, IoT center. So there are different kinds of, like we can say, properties, networking, identity, and matrix diagnostic setting. So these are the just a basic overview about our IoT center. The main dashboard where we can find. So there you can see a URL. So click on that to go to the actual portal of our application. So here you can find all kinds of device when you will connect through it.
Here you can select any device template, and there are different kinds of options like data explorer, dashboard, jobs, and we will see all these things when we connect our IoT devices with this. Right now we select our custom application. That's why it is not giving us option to connect. Uh, to connect our this kind of devices, we have to select some kind of template before that, right? Let me go to the resources. Okay, so if you want to go with any kind of the template, how we can use that template? So select here any relevant template according to your IoT devices. So right now, let's take an example about the template. We can take as a smart meter analysis or in a store analytics. So right now, what we can select smart meter analysis. Okay, हम ये लेके चलते हैं. Next, we will create another IoT Central with the IoT template. Then there is a mistake. Basic validation required information. I think हमने कुछ मिस कर दिया. Okay, resources select करना हम भूल गए थे. So it is important to select any resources. टेम्पलेट क्रिएट करने से क्या होगा, ये आपको कई सारी कुछ चीजें आपको वहाँ पे देगा. लाइक से कि कुछ काइंड ऑफ डैशबोर्ड दे सकता है, काइंड ऑफ ग्राफ्स आपको वहाँ पे दे सकता है. Okay, so this is the example through the template. What we can do, we can go to our Azure IoT application from here. Okay, so let's go to our application that was the smart tracker. Okay, हमने जो बनाया था वो एक कस्टम, ये जिसको हमने अभी इसको एग्जांपल लिया था, कस्टम लिया था, दैट मीन्स विदाउट एनी टेम्पलेट. जो हमने सेकंड टाइम देखा वो विद टेम्पलेट था. तो हम अभी चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे, यहाँ पे हम अपना अब नेक्स्ट उसमें डिवाइस क्रिएट करेंगे. So to create a new device, you can
give here a name, like we can give a smart tracker. ओके, तो हमने ये डिवाइस क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब हम इस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको ऑप्शन आएगा कनेक्ट का। बट अभी तो हमारे पास आई थिंक सेंसर्स नहीं है, ना कोई हमारे पास हार्डवेयर है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी अपने मोबाइल को एज अ सेंसर और वी कैन से एज अ कंट्रोलर यूज करेंगे। ओके, सो मैं एक बार चाहता हूँ कि आप सब चैट्स के अंदर सभी लोग बताएं कि हमारे मोबाइल के अंदर कितने सेंसर्स, कौन कौन से सेंसर्स होते हैं। वन बाय वन यू कैन ड्रॉप द नेम ऑफ ऑल काइंड ऑफ सेंसर। हमारे मोबाइल के अंदर कौन कौन से सेंसर जो कि हम अब लगभग डेली यूज करते हैं, राइट। So please do comment in chat section regarding the all kinds of sensor in your mobile. Anyone? You can start from. It looks like आपका chat update नहीं हो पा रहा है. Many people have already texted. Sorry, I think मुझे भी लग रहा है कि मेरे पास कुछ अभी चैट के अंदर आया नहीं है। एक्चुअली इट्स विजिबल टू मी, मतलब काफी सारे लोगों ने आंसर दिया है। मैं बताती हूँ सर आपको, जैसे Wait. Okay. I got it. या एग्जैक्टली सर। Okay, now it's updating. No issue. So fingerprint sensor, right, and temperature sensor, definitely it is. Face identifier tool and GPS, biometric sensor, touch screen, GPS. लो बैटरी सेंसर नहीं होता, वी कैन से इट्स बैटरी मॉनिटरिंग सेंसर। ओके, और वी कैन से वोल्टेज मॉनिटरिंग सिस्टम, वोल्टेज मॉनिटरिंग, जो कि एक सेंसर है जो सिर्फ वोल्टेज मॉनिटर करता है फॉर द बैटरी स्टेटस। लाइट सेंसर, लाइट सेंसर आई थिंक आपको मतलब होगा लाइट इंटेंसिटी सेंसर, जो हमारी ब्राइटनेस को ऑटो एडजस्ट करता है। वो इसका नाम बोलते हैं कि LDR, लाइट डिटेक्टर, लाइट डिटेक्टर रजिस्टर। और क्या हो सकता है, और हो सकते हैं गायरोस्कोप। आई थिंक जो मोबाइल हमारा जैसे कि हम मोबाइल को अपने पॉकेट में रख लेते हैं, राइट, तो ऑटोमेटिक में उसकी जो ब्राइटनेस है वो बंद हो जाती है और हम मोबाइल को कैसे होल्ड कर रहे हैं। जायरोस्कोप तब आपने अब उसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि जब अ, हम उसको फ्लिप करते हैं, जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं, हम उसको हॉरिजॉन्टली से वर्टिकल से उसको हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है उसकी स्क्रीन। वो उसको कैसे पता चलता है, उसके अंदर जो जायरो सेंसर लगा है उसके अकॉर्डिंग। और और क्या होता है, माइक होता है। माइक भी ऐसा सेंसर है जो कि हमारी वॉइस को डिटेक्ट करता है, राइट। ओके, सो दिस काइंड ऑफ सेंसर ऑलरेडी इनबिल्ट, और काफ़ी सारे और भी सेंसर्स हो सकते हैं, बट दिस आर द मेन सेंसर जो कि हमारे मोबाइल के अंदर हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वो सारे सेंसर्स को यूज़ करेंगे और उन सबका डेटा हम एज IoT सेंटर पर सेंड करेंगे और उसको रियल टाइम में ग्राफिकल फॉर्म में उसको देखेंगे। तो फॉर दैट लेट्स गो टू अवर डैशबोर्ड। ओके, तो आपको क्या करना है कि ये हमारा जो डिवाइस है जो हमने बनाया है स्मार्ट ट्रैकर, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो टू कनेक्ट दैट डिवाइस we will click on the connect. So there are two options through which we can connect. One is the key and second is the QR code. So this is the QR code. हमको इसके कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट की एक ऑलरेडी एप्लीकेशन है दैट इज IoT Plug and Play, दैट इज अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर। फॉर दैट मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन शो करता हूँ, जहाँ पे आप किस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वो आप देख सकते हैं। So I'm requesting to coordinator. I'm joining from my mobile site. So please allow that. Sir, could you please repeat?
एक्चुअली मैं अपनी आईडी सेकंड आईडी से ट्राई कर रहा हूँ ज्वाइन करने का अपने मोबाइल से, तो आप प्लीज उसको अलाउ कर देना। हाँ सर, श्योर। Okay, can you give me permission to share? सर आपका नेट काफी लैग हो रहा है मेरे एंड पे, एक बार आप रिपीट कर सकते हो? बहुत ब्लर आ रही है आपकी आवाज, लाइक बहुत सॉरी, क्रैक हो रही है। आप मुझे सेकंड आईडी से अलाउ कर सकते हो क्या प्रेजेंट स्क्रीन प्रेजेंट करने के लिए? यस सर। या प्लीज अलाउ मी। सर एक बार उस आईडी से आप अपना हैंड रेस करेंगे? श्योर। एक्सक्यूज मी सर, हम आपको इस वाली आईडी पे अलाउ नहीं कर पाएंगे सिंस ऑर्गेनाइजर इज नॉट प्रेजेंट इन द मीट। वी आर रियली सॉरी। Okay, okay, okay. Uh, wait, let me try to join my same ID. अच्छा, मैं सेम आईडी से भी नहीं कर सकता क्या प्रेजेंट? सर आप इस वाली आईडी से जिससे आप बात कर रहे हो उससे तो कर सकते हैं। एक्चुअली मुझको मोबाइल के अंदर प्रेजेंट करना था।
So is there any way कुछ हो सकता है क्या? सर आप अपने इसी टीम आईडी से मोबाइल पे लॉगिन करिए तो हो जाएगा विदाउट लिविंग दिस Sorry. मीट। सर आप इस मीट को बिना लीव किए सेम इसी आईडी से मोबाइल पे लॉगिन करिए तो या स्क्रीन एक्चुअली मैंने सेम आईडी से किया है जिससे मैंने यहाँ पे आईडी किया है, जिस आईडी से मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है, अभी मैंने उसी आईडी से वापस लॉगिन किया है। सॉरी सर, वो बिना ऑर्गेनाइजर के वो अलाउ नहीं हो सकता स्क्रीन प्रेजेंट करना। माइक और कैमरा तो हम हमारे एंड से अलाउ कर सकते हैं, बट स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पा रही है। सर हमें एक पिक लेनी थी, तो आई एम अलाउइंग एवरीवन टू ओपन देयर कैमरास। इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि एक बार वो अपने कैमरास ओपन कर लें so that we can take a screenshot. आप सब कैमरास खोल सकते हैं। I have allowed it. And guys, chat section में attendance link भी है. Wait a minute. I request कि और लोग भी एक बार कैमरा ओपन कर लें. And after this, we will continue our example. No issue. Sure, sir. एक second, sir. Guys, on the go of 1, 2, 3, smile कर दीजिए because I'm gonna take a screenshot. Yes. Okay, done. Thank you. So I think अभी तो मैं screen present नहीं कर पा रहा हूँ, but I think it's not a very big deal. What you have to do, you have to download one mobile application from the Play Store. Let me present my desktop screen again. So here you will click on the connect, click on the QR code. This is the link, I think, to download the application from the Play Store.
Okay, so download this application, and after that, there will be an option to scan the QR code. Let me try to show that in my camera. Wait a minute. I think अभी आपको ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत visible होगा I think screen. So what you have to do, I already installed application in my phone. Here, there is a option directly on in the home screen. Scan the QR code, the central option. So here, now we have to scan the QR. Now I'm going to scan the QR code that is in our AI central application. So I scanned it. It will take some time to connect with the Azure IoT Central. You can see it's connecting. Let it finish. Okay. Till then, I think it is connected. We can close this section of connecting through the QR code. Now we'll go over again devices. Here we go to our smart tracker. Click on the overview. Here you can see all the data that is coming from our mobile application. What is coming? There right now, my battery level is a 64 and altitude is 5.7, and there are other sensors like this data is from our gyroscope of mobile application. When we tilt our mobile application, we can see the changes in this graph and in the data. Here we are getting the location lat long of our devices. It is the pressure, magnetic induction, rotation, right? So there are different kinds of data we can see at our screen. It is coming from our mobile dash as a sensor, and there are other options to explore the other kind of things like making query, and this is the dashboard. Here we can make a dashboard using the device template, and there are other tutorials and documentation regarding the making dashboard. We can set the rules for the data. If you want to perform some kind of operation from the data, you can create rules. Okay, so I think this is enough for our today's practical. And don't go anywhere. I have, you can see your second surprise. That is another IoT devices here. Okay. So if you have any kinds of doubt regarding this practical, you can ask me in the chat section. Right now we connected our mobile as a sensor. You can connect your another IoT devices. For that, what you have to do, you have to download the SDK, and you have to flash that SDK in your IoT devices, and directly you can connect that through the QR code or give provided keys. Okay. So I am waiting for your questions.